Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning, sir. Guys, just a quick update. This is nothing related to our research, but from an investor point of view or from an analyst point of view, अगर तुमको खुद को investment करना है, तो यहाँ पे 40% in this entire. So year to date means January से अब तक, ठीक है? Year to date. जब से year चालू हुआ तब से अभी तक. Usually in finance it is from April to March वाला year आता है, but year to date जब इसमें pricing में बोलते हैं, it is starting from January. So 12%, the Nifty is down 12%. But you see the energy stocks is performing, rather NTPC, Power Grid, so 10-12% they are up. Now this is because of obviously because of the energy prices being increasing. अच्छा अभी उसमें war के बारे में कुछ लिखा नहीं है, but they have written over here that because of increasing summer heat and there is expected that March से May तक there will be couple of many heat waves which will be impacting the country, and that will lead to increasing power demand. So मुझे power demand से लेना देना नहीं था. I was just looking at some other news as well. यहाँ पे ना एक ACs के बारे में लिखा था that AC consumption will also increase because of this. अभी यहाँ पे ये काफी टाइम से चल रहा है that overall the IMD has said that India में 2% के हिसाब से, sorry, 2 degrees के हिसाब से temperature will keep on increasing on a yearly basis. That is something a concerning sign. तो यहाँ पे जो भी power consumption है, इस पर रिसर्च नहीं हो सकता. You cannot tell all these things in interviews, but probably खुद के लिए भी you are investing in any fund. तो अगर तुमको पावर सेक्टर नहीं समझ, जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड पावर सेक्टर, सो आई गो एंड इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स. एनर्जी ईटीएफ्स है, मोतीलाल का एक एनर्जी ईटीएफ है, उसमें आई इन्वेस्ट. दिस इज फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज स्टॉक समझते नहीं है, तुम जाके इंटरव्यू में बात नहीं कर सकते उसके बारे में. तो मेरे को सिर्फ ये लगा, इसके लिए मैंने बताया, बिकॉज आई हैव आल्सो इन्वेस्टेड. सो आई जस्ट थॉट टू टेल यू गाइस. ओके. Okay, fine. Anyone wants to start? Karthik, you want to start with the news? Yes, sir. Am I audible? Karthik, is there? Yeah, yeah, yeah. Hello. Yeah. Karthik, got it. So my news is regarding increase in first-time buyers due to GST cut. So because of last year GST cut, there was a sudden increase in first-time buyers of four-wheeler, where massive majority of these people come from existing two-wheeler buyers. Whereas statistically, Maruti Suzuki has increased their market share in first-time buyers to 48% and Hyundai to 42%, where overall passenger vehicle sales was around 4.5 million units. It was majorly happened due to lower prices of GST and like financial loans provided to first-time buyers. When it comes to market share basis, so SUV has the most market share, which is around 55 to 65%, followed by hatchback, which is 21 to 23%, sedan 8 to 9%. When it comes to fuel mix, petrol has the most market share with 60 to 65%, followed by diesel 18 to 22%, and then CNG 10 to 12%, and EVs are currently holding around 2 to 3%. Whereas SUV has the most growth, which has been increased by 7% year on year basis, in which compact SUV has been grown 10% to 12%, whereas hatchback has been declined 2 to 3%. And when it comes to units, which particular unit has been sold? So Maruti Desire has sold maximum last year, which is around 160 K units to 170 units. Overall, like GST cut has majoritarily impacted the four-wheeler sale. Majoritarily, it has been increasing the sales of low cost four-wheelers. And also, I would like to add that 75 to 80% of these sales that has been happened in first time vehicle buyers has been from financing.
Yeah, this is my news regarding it. Okay. Okay. So, what is the future prospect, Karthik? ये तो ठीक है, मतलब this news, good data points are fine. अच्छा है, then you told about how many diesel cars are there, petrol cars are there. The question is now, what is the future? What do you think? Sir, I think there is a particular shift in consumer demand where there was earlier pattern that firstly people buy two-wheelers, then they will go for premium two-wheelers, then they buy cars. So there is a shift that I think that due to this GST cut and like upcoming norms, there will be two-wheelers and then people will be shifting to low-end four-wheelers. They will not go for premium two-wheelers. I think this Okay. is one of the big demand shift that will be happening. Okay. Yeah, this is happening. Okay, people. Okay, you are saying premium will not grow. This is what you think. Sir, I believe this news was regarding majorly GST cut and how auto loans are impacting the sales. So Correct. basically, these two are majority impacting the low end four wheelers rather than premium SUVs and everything. This was news relating to the entry level cars, I would say rather. Yeah, so that's Yeah. why I am like saying about entry level cars will be increasing their sales. Yes. Yeah. So you have to. So when you read this news, now let's say you have read this news. Now in the future, after no, after let's say now for first month, first day of every month, there will be auto numbers which are coming up. You need to find whether this trend is going in the right direction that you think, or there is some change. Are the entry level two wheeler, entry level four wheelers doing good or not? Yeah. Okay, so that is you have to always update yourself. Now आज ठीक है तुमने पढ़ा नहीं. The reason I ask you is because what is your thought on it? If you are saying four wheelers मतलब passenger vehicles grow होने वाले हैं entry level, then you have to think about okay, अगर ये अभी ग्रो हो रहा है तो नंबर्स किधर दिख रहे हैं क्या इसके, एंड उसमें भी देन कौन से प्लेयर्स हैं, who are the products in that best selling products. So we know it is Wagoner and Swift who are the top selling. Baleno आती है उसमें भी. Yes, sir. Okay. Yeah. Yes, sir. Thank you. Yeah. Okay. Karth, Raj, anything to add on? Hello. Yes, sir. So I have also presented the same article. So Yeah. just one point, sir, I would like to add. So it was also mentioned in the article that over 51% of the new customers post GST are upgrading from two-wheeler vehicles to entry-level four-wheeler vehicles. So it means a lot of new buyers are coming in four-wheeler segment. So this was like one data point which I would like to add. So now I'll be moving on to the second article. So No, 1 second. So when my follow-up question comes over here, when you say two-wheeler buyers are converting to four wheelers, yes, sir. which four wheelers? Which four wheelers is driving the growth? Sir, it is basically into the entry level segment. Like, for example, we can say in the bracket of 6 to 8 lakh rupees. तो कौन से गाड़ी आते हैं इसमें? Sir, in this range, there are various models. If I talk about like Nexon हो गया, sir, Punch हो गया. So, नेक्सॉन 6 में थोड़ी आती है. नेक्सॉन sorry, तो sir. कॉम्पैक्ट मेरा कॉम्पैक्ट एसयूवी आएगा नेक्सॉन. हाँ, नेक्सॉन 6 लाख की थोड़ी आती है. sir, 6 to 8 lakh. So, base model. नेक्सॉन का पीस है ना, आई डोंट थिंक 6 Sir, I लाख have आएगा. also written a same article about that. I think like Celerio or Wagoner like it. नहीं, I'll ask you. So, कार्तिक, ऋषिकेश एंड राज, Yes, तुमने ये sir. सब न्यूज़ बोले ना. इन दैट जब तुम बोलते हो एंट्री लेवल पे ग्रो होती है, तो पता है हमने ऑटोमोबाइल का किया था, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप किया था, उसमें मैंने बोला था तुमको नंबर्स पंच करने हैं. तो तुम्हारा Right. ध्यान क्विकली उस पर जाना चाहिए कि ये एंट्री लेवल सेल्स मतलब किसकी बात हो रही है. इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ी किसकी, कौन सी बिकती है, कौन से कंपनी की बिकती है? Maruti. 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 मारुति. हाँ, बट Sir, कौन then से it will be मॉडल्स बिकते हैं Desire. भाई, कौन Okay. से मॉडल्स बिकते हैं उसमें? अभी सेलिंग टॉप सेलिंग में कौन है, कितने कितना डिजायर है क्वांटिटी सर है अभी। उसका? डिजायर है. डि- वो तो अलग रीजन के वजह से ग्रो हुआ था ना, हमने वो डिसाइड भी किया था बिकॉज ऑफ द टूरिज्म फिर एंड उसके बाद फिर वो अभी ये अर्टिगा। अभी 6 to 8 लेंगे में अर्टिगा थोड़ी आती है. S- Sir, Maruti, नहीं ऐसे Swift, एसयूवी। Maruti, Baleno, Wagoner, Tiago. अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड. या करेक्ट, यू आर करेक्ट. सो अंडरस्टैंड, जब तुम रैंडमली गाड़ियों की बात नहीं करना चाहिए. अगर तुम बात करते हो ना कितना कितना बिकते हैं, कितने की आती है, एक शोरूम प्राइस आई डोंट थिंक इसका 6 लाख. तुम सीधा टू व्हीलर से अर्टिगा नहीं लेने वाले. टू व्हीलर से क्या लेते हैं हम? सोचो ना, तुम भी ह्यूमन.
हमारे ऑल्टो। पास टू, ऑल्टो, हाँ मतलब उधर से चालू होती है। ये ऑल्टो, सर। वैगनार, स्विफ्ट, वैगनार, सेलेरियो। हाँ सिलेरियो, इग्निस जो भी है उसकी गाड़ी। हाँ तो ये सब मॉडल्स में ग्रोथ आ रहा है क्या? पहले तो कितनी बिक्री है, अभी तुम टॉप मॉडल देखो तो बलेनो बिकी है सबसे हाईएस्ट, जो तुम्हारी ये है क्या, टॉप टॉप सेलिंग है, तो उसमें पंच भी आती है 6 लाख के इसमें, टाटा की पंच। तो ये सब नंबर्स तुमको लिंक करने हैं ये न्यूज से, कि जब ये न्यूज आती है तो ऐसे ही रिसर्च होता है। रिसर्च इज नॉट अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर रीड करने का तुमने क्या किया, क्योंकि ये तो डेटा है ना हमारे पास। एक्चुअली ऐसे डेटा सब इंडस्ट्री में होते हैं, प्रॉब्लली हमको मिलते नहीं है, बट ये पेड डेटा होते हैं इसलिए हमको मिलते नहीं है। बट रिसर्च ऐसे ही होता है कि जब कोई न्यूज आता है तो उस पर तुम आगे कंपनीज की बात कर रहे हो कि टू व्हीलर अपग्रेड, टू व्हीलर से फोर व्हीलर अपग्रेड, तो कौन से लोग अपग्रेड हो रहे हैं, नंबर्स में क्या दिख रहा है। हम बोलते हैं मारुति द टॉप सेलर, फिर सेकंड ग्रोइंग कौन है उसमें, तो टॉप सेलर है तो फिर उसकी क्यों बात कर रहे हो, फिर ग्रोइंग की बात करो। होंडा की है गाड़ी। बट अगर तुम न्यूज पढ़ते आ रहे हो तो हम ये भी पढ़ रहे हैं कि द ट्रेंड इज मूविंग टुवर्ड्स एसयूवीज। तो नाउ दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कार्तिक, ओके फॉर यू इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कि तुमने बोला कॉम्पैक्ट एसयूवी ग्रो हो रहा है, और तुम एक साइड पे बोल रहे हो कि सर सिडान हैचबैक ग्रो हो रहा है। तो तुम ही कंफ्यूज हो कि बताना क्या है तुमको। मतलब ऐसे इंटरव्यू में फॉलोअप क्वेश्चन आएंगे तुमको वापस उसके बाद, ये सर। कि तुम एक कुछ तो बोलो ना, कि तुम बोल रहे हो इधर से, अभी तुम न्यूज तुम्हारे आर्टिकल्स में मैं देखता हूँ रोज रोज, तुम तो बोल रहे हो एसयूवी में ट्रेंड हो रहा है, लोगों को हैचबैक लेनी नहीं है। ठीक है? तो ये सब नंबर्स में बात कर, सर ऐसा ऐसा नंबर है, देखो मैं इतने टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, नंबर्स ये लोग बोल तो रहे हैं टू व्हीलर से शिफ्ट हो रहा है, तो शायद से प्रीमियम पे शिफ्ट हो रहा है, या शायद से मिड में शिफ्ट हो रहा है। और अभी कैफे नॉर्म्स आ रहे हैं, तो कैफे नॉर्म में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन द स्मॉल कार्स, तो उसके प्राइसिंग बढ़ेंगे, शायद से डिमांड कम हो सकती है। ये हो गया तुम्हारा एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? ओके जब Sir, सर। तक, जब can I तक go हाँ, next, sir? ओके। बन बन सका ना। सो तो जब तक तुमको ये सब डेटा अवेलेबल नहीं है, तब तक योर रिसर्च इज लिमिटेड। तो हमने चालू किया था न्यूज़पेपर पढ़ के, बट इसके लिए मैं बोलता हूँ ऑटोमोबाइल के वर्कशॉप जब आते हैं तब पहले तो कर ही लेना, कि इतने सारे न्यूज़ आते हैं ऑटो के बारे में, and तुमको वहाँ पे अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ों में। Okay. ओके, ओके सर। ओके। ओके, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू, थैंक Sir, यू। can I continue with my second article? या राज। Yeah, so my second article is on Ola Electric. So Ola Electric is again in the news. So on the Wednesday after a board meeting, the company has decided to reallocate 575 crores of rupees to debt repayment, which was initially planned for R&D purposes. So the primary motive to do this is increase in the debt component of the company. So the total debt for the FY26 is 526 crores, and for FY27 the maturity of debt amount is 610 crores. So there has been increase in the total debt obligations for the company. So initially, when the company had raised funds out of the IPO, the total amount was approx 5,200 crores, out of which they have already utilized approx 4,100 crores of rupees. And they had allocated 1,600 crores of rupees for R&D. But now they are using the majority of the portion towards debt repayment. And this is the second time they are doing it. The first revision was in August 25, where they have used the planned amount for lithium battery expansion, which was diverted to the debt repayment. So in total, they had the total allocation toward debt repayment has increased significantly to roughly around 1,200 crores of rupees, which was originally planned 800 crores rupees. And also due to this, the original amount which was allocated towards growth expansion now has been reduced, which is also reflected in terms of number. So if I talk about numbers, then for the recent quarters, their sales has been down, has been declined 61% on a YY basis to roughly 32,800 units, and the stock is already down by more than 50% since its IPO. And companies also facing heavy competition from other players like Ather, Bajaj, and TVS Motors. And also to counter this, the company has also announced further fundraising plans, including 1,500 crores via shares and 1,700 crores via through debentures as well. So concluding this article, this can be termed as a red flag since they have done this for the second time within the span of 8-month period, and the investors are also losing confidence in Ola, which is already reflected in their sales performance and volumes as well. And also the share price was down by 5% post this board meeting. आई थिंक ओला इज लाइक ऑलमोस्ट फिनिश टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वाट लग गई है उसकी। Right, sir. ओके, फाइन, दिस एन अपडेट, ठीक है, फाइन, ओके दैट्स। Okay, sir. Sahil, you wanted to say something? Sorry, Yes, someone sir. was saying that can I go? I missed out. Okay, Yes, sure. Sahil. I'll start, sir. My news is from Yeah. Financial Express, page number 4. It is on Honda India.
So Honda India is currently taking its annual capacity to 8 million by FY28. So planning with an investment of about 15 billion in its Tapukara plant, they're adding about 70,000 units to its annual capacity, summing the total to 2.2 million. So this capacity will come live by FY28, and this is an expansion in the ICE engine space. So looking at the competitive perspective, Honda is in intense competition with Hero. So in the month of January 2026, the difference between Hero and Honda were about 629 units only. So looking at the scooter segment, Activa had a growth of 46% on YoY basis, selling about 254,000 units, and Shine also contributed to about 140,000 units. Sorry, 140,000 units. So, compared to the hero segment, Activa is quite a leader, where the Destiny, Zoom, and other models are not in well par with Activa competition. And looking from motorcycle perspective, Shine is far better than the Splendor. In numbers of the Hero Splendor, it is not quite yet visible, but I have taken a personal review of the purchase. So the people who has purchased Splendor. So the perspective. So the review is quite biased towards Honda models, and the difference between Shine and the Super Splendor is only 10,000 rupees. So Honda can have a quite leverage of this capacity addition in the ICE segment. And again, coming to comparing it with the EV segment, where Ather grew by about 50% on YoY basis, and also iQube from TBS also grew about 50%. So comparing overall, so Honda is quite betting rationally on the ICE segment, where the Pradhan Mantri e-drive subsidy will be ending by about 2028. An addition about 900 crores has been done for the next 2 years, where this year the PM e-drive should have been ended, but an addition of 2 years with a 900 crores of subsidies has been put. So it will be a key pointer to note how Honda is going to leverage its manufacturing space, or announce its EV capex, and how this ICE segment is going to perform, where this ICE segment is about 95% of the volumes. I see. So now they are saying that they will come into electric, no? That is what they are saying. हाँ Activa सर, electric हाँ आया हाँ ना? और उसका दो मॉडल्स है होंडा का, क्यूसी एंड एक और एक था, वो दोनों नहीं चला, दोनों एक्टिवा ई करके। एक्टिवा ई तो नहीं चला क्योंकि वो बैटरी स्वैप वाला था और उसमें घर पे चार्ज नहीं कर सकते। और जो क्यूसी Okay. वाला मॉडल ना, उसका कैपेसिटी शायद से 80 किलोमीटर ही था, मतलब रेंज 80 किलोमीटर था। तो Okay. बीडा हीरो वालों ने क्या किया, स्कूटर सेगमेंट में बीडा 2.0 जो आया ना, उसमें 3 वेरिएंट्स है। 80 किलोमीटर वाला भी है और फिर 150 किलोमीटर तक भी है। तो उसमें 2.2 किलोवाट वाला बीडा वाला बेसिक मॉडल एक है, और फिर हाईएस्ट रेंज जो है वो 3.6 किलोवाट बैटरी वाला कुछ तो है। तो ईवी स्पेस में हीरो बहुत लीड कर रहा है कंपेयर टू होंडा, एंड होंडा तो है ही नहीं ईवी में फिलहाल। Honda है correct. हाँ तो I mean they are coming up with an 8 million 15 billion investment. इतना कर रहे इन्वेस्टमेंट, हैं? हाँ 15 हाँ billion हाँ 1500 करोड़. हाँ, 1500 करोड़ Okay. तापाकोरा प्लांट में। Okay. बाप रे. Oh. So this will be मतलब if it has specifically EV के लिए बोला है क्या ऐसा? नहीं 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 नहीं, ऐसे. ये सिर्फ आईसीई के लिए है मतलब। और हाँ सर, एक और चीज ऐड करना था। इनका होंडा का ना, हमने घर में पर्सनली परचेस किया इन पनवेल रीजन। तो वहां पे ना वेटिंग पीरियड 25 डेज तक का है, 20 डेज तक है। तो होंडा का ना बोलते हैं ना कि रेत्सु मॉडल के हिसाब से ना, मतलब वो लोग ऑर्डर लेने के बाद मैन्युफैक्चर करना, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उसमें कैसा है, ग्लैमर वगैरह का परचेसिंग कर लेते हैं उससे अच्छा। ग्लैमर फटाक से अवेलेबल हो जाता है Correct. Okay. कंपेयर टू यूनिकॉर्न वर्सेस यूनिकॉर्न और SP160। Okay. So it means that if they are investing so much, so they are assuming there is a हाँ demand coming. हाँ, डिमांड है सर। Then एक्चुअली हमको मतलब हमने यूनिकॉर्न कैंसिल कर दिया और फिर हाँ एक हाँ. जन ने ग्लैमर ले लिया। मतलब इतना फर्क तो है एक्चुअली ग्राउंड में। Okay. Okay. So that is why they are मतलब इतना हाँ डिमांड हो गया है. That's crazy. Now हाँ this is like
पर होंडा के तो मेरे ख्याल से कोई टॉप ये ना, शाइन ये सब भी है ना, शाइन है, हाँ हाँ, एक्टिवा है। शाइन 125 है हाँ, और शाइन 110 भी है। और उसके बाद यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न 150 उन्होंने बंद कर दिया, 160 जनवरी से शायद से वापस से लॉन्च हुआ था, दिसंबर वगैरह से। तो ओके। उसके लिए भी बहुत डिमांड है, बस वो मिलता नहीं जनरली इसके जल्दी। यूनिकॉर्न, हाँ। ओके, आई थिंक उसका तो ज्यादा सेल्स नहीं होगा कंपैरेटिवली, हाँ ज्यादा नहीं है, और बट कंपेयर हाँ टू, हाँ। बराबर है उसका, थ्री कुछ तो ज्यादा थाउजेंड्स में ही है कुछ। ओके, ओके, ओके। एंड दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द ईवीज। ईवीज कुछ नहीं है, होंडा का ईवी का कुछ आ ही नहीं रहा है। ओके। उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया ना दोनों मॉडल्स, हाँ, दोनों सितंबर डिस्कंटिन्यू कर दिया। 2025 से डिसकंटिन्यू कर दिया, क्यूसी वाला और एक्टिवा ई। एक्टिवा ई का जनवरी में कुछ सेल्स हुआ, बट वो शायद से इन्वेंटरी क्लीन अप रहेगा। अच्छा, ओके, ओके। And so what we can assume is that demand is coming in two-wheelers and कमिंग, हाँ specifically entry level segment में। हाँ। और होंडा का बहुत ज्यादा लेवरेज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू हीरो, क्योंकि स्प्लेंडर वाला मॉडल है ना उतना अच्छा नहीं है आजकल। जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि यार वैसा, मतलब स्प्लेंडर लेने वाला इंसान कैसे सोचता है कि ये गाड़ी अभी मैं जिंदगी भर चलाऊंगा, और करेक्ट, हाँ। शाइन लेने वाला वैसा नहीं सोचता है। तो स्प्लेंडर वाला कैसा हो रहा है कि इतना स्ट्रेंथ वाला मॉडल नहीं है बोलते, मतलब हल्का गाड़ी है बहुत, ऐसा रिव्यू आ रहा है, बट नंबर्स में अब तक दिख नहीं रहा है कुछ। तो हो सकता है कि आगे जाके दिखे। ओके, 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 फेयर इनफ। इन टू थैंक्स। व्हीलर्स पे ध्यान रखना चाहिए, कीप एन आई ऑन टू व्हीलर्स, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, हीरो हीरो का वेडा वाला बस अच्छा है। ये लोग ईवी में नहीं है, और ये लोग आईसीई में इनसे फार बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लोग का अलग अलग लेवरेज चल रहा है और हीरो इंटेंस का प्रॉब्लम कंपटीशन। है, हीरो इज वो टू व्हीलर में टॉप 6 लाख बिकता है ना, ऑलरेडी हाँ टॉप हाँ पे है। हाँ तो फिर इट डजंट मेक, मतलब डजंट मेक एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हाँ हाँ, और वो टू भी व्हीलर है। में भागी ये टीवीएस भी है ना, टीवीएस का भी एक टीवीएस भी है, कैपेसिटी है, हाँ। टीवीएस इज डूइंग गुड है। टीवीएस का ईवी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, 50% ग्रोथ इसका भी है, एथर का 50% ग्रोथ है। ओके, ओके, फाइन, फेयर इनफ। हर्ष, गुड वन साइड। थैंक यू सर। Hello, so am I audible? या हर्ष, योर। Yeah, so my first update for the day is gas crisis is putting a spotlight on the ready-to-cook and ready-to-eat sector of food industry. Sales in the first week of March grew by 2.9%, in stark contrast to the whole month of February giving a 3% growth and January giving a negative 0.9% growth. However, the RTC and RTE sector remains underpenetrated, with total sales amounting to only 0.3 to 1% of total packaged food industry. The direct beneficiaries would be Nestle and ITC. Nestle, which has a catalog of Maggi, pasta, soup, poha, upma, all under the Maggi brand, contributes to a quarter of its sales, which is significant. ITC also has significant brands like Kitchen of India, which is a premium brand offering subsidies under that, which is a part of ready-to-eat sector, and Ashirwad brand, which is aiming for affordable and mass consumer consuming segment. Together, ITC rakes about 5 to 8% of its revenue for the whole food industry, for the whole food segment that it sells. So, I didn't get this news, Harsh. So basically, the gas problem is helping, or No, sir, it is helping the ready to cook and ready to eat sector because it is hurting the restaurants right now. okay? अच्छा, okay, हाँ, this is I read correctly. So Nestle and who's there? ITC. So only these two are primary listed, but there are many players in the private segment like MTR. We have U Noodles, Haldiram, Gets. They're also there. I couldn't find any tangible data that I could put regarding the private players. So Okay. I think even Tata Consumer is there in this list. yes, sir, Tata Consumer is also there. Tata Consumer है, and there is like Better Foods, ये सब भी है थोड़े बहुत, है ना, listed So companies. there are many smaller market players in this, but the listed entities which are mainly in the spotlight are these three. Okay, great. I think this is something unusual that happens because of the gas prices, ready to cook Yes, sir. के And products also, करके. sir, they will be profiting because unlike restaurant food, which has to be consumed, after the food gets delivered to you, these have a higher shelf life, 6, 12, or even 24 months. So even if
the cost increase today, they won't have to necessarily pass on the cost to customers tomorrow because they may have some inventory earlier from earlier. Correct. Food industry, it's an issue. Here, though, I think, it's fine. I mean, this is an uneven demand, which is, we see first time. Yes, sir, but Um, it may be a catalyst, the gas issue. But I think because of how fastly we want, the gratification issue we have in our lives, I think ready to cook and ready to eat sector will be booming from now on. Many smaller brands are entering into this. There is a lower entry barrier also. yeah, So correct. you noodles are actually very doing very good in this segment. Yeah. Apart from, correct. I agree with this. That apart from the gas problem, this ready to cook was growing, and ready to drink, ready to cook. This all products are increasing because of the fast life pace of the youngsters. Yes. And that you don't have time to cook, and you can get noodles and all वो easily मिल जाता है, तो better. Cooking वैसे भी कम हो गया है इंडिया में. The new generation. Yes, sir. Okay. Yeah. About a second news. So it is largely regarding Durandar's success and how it Okay. would benefit PVR Inox. Um, for the calendar year 2025, the Hindi film industry made 5,500 crores contribution and to PVR's kitty, out of which 1,000 crores was alone from Dhurandhar. So it was a significant step up for the PVR in terms of Dhurandar's success. And Dhurandhar 2 is also supposed to make at least 1,000 crores, although newer films of the same franchises are estimated to make 40 to 50% more than their predecessors. So it should at least make 1,000 crores. But other than Dhurandhar, the Hindi film industry has not contributed very much. So PVR is also pivoting towards regional sectors and also the southern market, which is largely ignored before its merger with Inox. So right now, you may have heard that the first Gujarati film Lalo got 100 crores in the box office. Correct. Yeah, and the footfall also increased due to Dhurandar's success in the last quarter three. Footfall was 40.5 million, 9% year-on-year increase. Occupancy at 28.5% versus 25.7% in quarter three, FY25. The movie also runs longer, 4 hours, which is not generally seen today. Also, the Dhurandhar movie also was almost this long, 3.5 hours, I believe. So this also indirectly contributes to their F&B segment also. Because if someone is staying for 4 hours, they are obviously going to buy food and beverages. Correct. So I think after a long time, there is some movie which is gonna that hit in India, and I think Dhurandhar has done, I think, 100 crore on the day one only, if I'm not wrong. Yes, So I that's a also saw this. Yeah. yeah. So that's a super, and still now the weekend will be there, Friday, Saturday, Sunday. Yesterday there was holiday in some parts of Maharashtra. Mm. So yeah, I think PVR. But as you rightly mentioned, this is, as they have also mentioned, it is just for now, but only for now. Yes, because So this will help them end the year on a higher note. But after this, IPL starts, and obviously it will hurt PVR's revenues. PVR revenue, yes. So this industry is not doing good. I've been tracking PVR from long time. I thought it will. I still remember I purchased PVR when this your Avengers had released. Avengers Endgame, that time it was running 24 hours. That time was the same thing happened. That 24 Okay, so hour around cinema was running. 2019. 2019, yeah, before COVID. So that time also, I still remember I saw a movie. I saw that movie at 6 a.m. in the morning just because the tickets were full. It was the first time that had happened. But it was like short term only. And then same thing is happening now for Durandar. Like shows are starting at 6 a.m. in the morning. But ठीक है, मतलब India is fine, but something like uh, how would I differentiate this from the Avengers is that Avengers was also outside India. Avengers is not an Indian movie. Still, it had that kind of Fan following, yes. fan following. So fine. I think you can just look at this. Yeah, estimated to be 1 crore. Yeah. Okay. Fine. Good one. I think just have a look at it. Drishyam 3 is also
not many big really Hindi release. Now what happened? I was saying that PVR is probably going towards South movies, which usually do not come at the north side. Like I hardly know any South movies which I have seen apart from those big heads like Pushpa and KGF. Yes, so initially I also thought that, but when I looked at PVR's number in screener, I realized that PVR screens, around 32% of screens are located in southern India. So what it is doing, it is banking on southern releases, but it is also banking on southern releases getting translated into Hindi. Like we had KGF and then Bahubali. You know, these couple of films, they put the southern film industry in the spotlight, and I think PVR is banking on that also because Bollywood is largely underperforming right now. Yeah, we may have 100 crore movies, but they stop at 100. They don't go 300, 400, 500. Yeah. Yeah, but it's just one time, no? For the entire year, just one time, 100 crore movies doesn't help you grow Yeah, as a exactly. company. Huh? You need regular cash flows for that. Okay, good. Okay, fine. Bhupendra, anything on Skoda? Yes, sir. Good morning, everyone. Yeah, so Skoda Auto is targeting a 10 to 12% growth in 2026, aiming to outperform the broader passenger vehicle industry despite rising supply chain risk. The company delivered a strong performance in CY25, with sales growing 106% year on year. That's an aggressive growth of Skoda registered first ever. Around to 73K units, largely driven by robust demand for the Kailak subcompact SUV. Meanwhile, the overall India passenger vehicle market stood at approximately 4.5 million units in CY25 and is expected to grow at moderate 4 to 5% in 26. This indicates that Skoda is positioning itself to gain the market share and outperform the industry growth. On the strategy front, the company is aggressively expanding its distribution network. It has already reached 325 touchpoints across 183 cities in calendar year 25 and is targeting around 350 touchpoints in 200 cities by CY26. The focus remains on deeper penetration in Tier 2 and Tier 3 markets, with a goal to cover nearly 82 to 83% of addressable market. So overall, Skoda growth will be driven by strong SUV demand, expanding reach, and its ability to navigate external supply chain challenges. Uh, and a part of that, sir, Skoda is only accounting for 3% of total SUV market, with the sale of 72K units in CY25. In this segment, Creta is leader in this segment with the sales of around 2 lakh plus units. Yeah, So, that's all from my side, sir. who will impact with this? Creta. सर सर इम्पैक्ट तो क्रेटा का मतलब डायरेक्ट कंपटीशन पड़ रहा है इससे अभी इसने एक जनवरी में फेसलिफ्ट कर रहा है कोडियक का जो कि अराउंड स्कोडा के क्रेटा के रेंज में ही आ रहा है तो नहीं, और कोडियक तो नहीं, कोडियक तो काफी महंगी आती है गाड़ी। नहीं सॉरी सर कोडियक नहीं ये इस कुशाक, काइलक काइलक 5 लाख, हाँ 5 लाख, यस, हाँ हाँ। जो कि 11 से 20 लाख के रेंज में ही आती है और सेम इंजन के साथ में 1.5 लीटर और क्रेटा भी 1.5 लीटर है और मारुति सुजुकी ब्रेजा का भी इम्पैक्ट पड़ेगा जिस हिसाब से मतलब ये स्कोडा टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को टारगेट कर रहा है और जैसे कि और इसका आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी ज़्यादा मतलब फीडबैक एक सर्वे आया था जिसमें फीडबैक काफ़ी अच्छा कस्टमर के तरफ से आ रहा है तो इस बेस पे सर इस इनका पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है CY26 में सर। ओके, नहीं तो इसका इम्पैक्ट, अच्छा, सो कल हम बोल रहे थे डस्टर के बारे में। डस्टर हैज लॉन्च, वो भी यही सेगमेंट में है। यू आर नाउ यस सेइंग सर 5 लाख हैज कमिंग, दिस इज आल्सो इन दिस सेगमेंट। दे आर सेइंग दैट दे विल ग्रो बाय 10 to 12%। डस्टर बोल रहे हैं कि हम भी मार्केट शेयर गेन करेंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, किसका मार्केट शेयर जाएगा? जाने तो वाला है डेफिनेटली, बिकॉज व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स कम्स, किसी ना किसी टॉप का मार्केट शेयर जाता है। अभी हाँ, इसमें सर टॉप में होंडा ही है इन द एसयूवी सर पार्ट। टॉप हाँ यस सर हाँ, टॉप में hyundai है नेक्सॉन है ब्रेजा है एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड मारुति का फ्रोंक्स भी आता है तो फ्रॉन्क्स भी आता ये लोग है। ऑलरेडी अपने मतलब सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हैं तो जहां तक लग रहा है इनका ही मार्केट डिस्टर्ब होने वाला है। करेक्ट, करेक्ट।
तो अभी दिखता है किसका होता है, सबसे ज्यादा मार्केट किसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा, ये हो सकता है कि 1-2 महीने के लिए हो या 4-5 महीने के लिए हो, बट स्कोडा इज एक्चुअली डूइंग गुड, काइलैक इज एक्चुअली अ गुड कार कंपेयर टू ब्रीजा एंड तुम्हारा नेक्सॉन। बट हाउ लॉन्ग डज इट सर्वाइव, वो है, क्योंकि हमेशा नए गाड़ियों का यूफोरिया होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, एंड देन इट फॉल्स डाउन, ऑब्वियसली राइट सर। बिकॉज ऑफ उनके सब इश्यूज होते हैं। स्कोडा ने अच्छा किया, बट स्कोडा इज देयर इन इंडिया फॉर सो मेनी इयर्स, डस्टर इज कमिंग न्यू। वो सिट्रॉन का भी बीच में आया था, सिट्रॉन इज आल्सो वाज प्लानिंग टू ग्रो इन इंडिया, धोनी को लिया था एड में, बट समहाउ इट डिडंट वर्क आउट। अभी वो लोग ईवीज में आए हैं। अभी इसमें सबसे ज्यादा व्हाट आई फील पर्सनली, ये सब गाड़ी आ रहे हैं, इसमें महिंद्रा का कंपटीशन ही नहीं है। इफ यू कैन एग्री ऑन दैट, देयर इज नो कंपटीशन फॉर महिंद्रा। सर इनका मतलब मिड इस फुल एसयूवी सेगमेंट में आते हैं, उनको एन स्कॉर्पियो एन क्लासिक, अगर कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट तो कंपटीशन नहीं है। है ही नहीं है। बट हाँ, बाकी सब होंडाई एंड तो अगर पैसेंजर व्हीकल्स में अभी कोई कंपनी देखनी है तो आई फील इट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर कंपनी, हाँ, महिंद्रा का एक भी प्रॉब्लम है कि दे आर ऑल्सो इनटू ट्रैक्टर्स, दे आर ऑल्सो इनटू कमर्शियल व्हीकल्स, एंड उनके थोड़े बहुत वो टू व्हीलर्स भी बना, थ्री व्हीलर्स भी बना रहा है इलेक्ट्रिक। हाँ तो ये थोड़ा एक महिंद्रा का डाइवर्सिफाई हो जाता है। बट हाँ, पैसेंजर व्हीकल्स को अगर देखना है तो महिंद्रा लुक्स अ प्रॉमिसिंग बेट। उसका ईवी पोर्टफोलियो भी चल रहा है, उसका आइस पोर्टफोलियो भी चल रहा है। यस्टरडे आई सॉ सम न्यू कार्स ऑफ महिंद्रा, वो XUV 9S इलेक्ट्रिक वाली जो है, लुक्स गुड, मतलब मुझे तो अच्छा लगा बाहर से, कल ही देखा मैंने, आई और थिंक कल। हाँ और सर महिंद्रा ने परसों ही ये उन्होंने लॉन्च उनका बैटमैन एडिशन जो है ना, वो उन लोग को प्री बुकिंग में ही पूरा मतलब सेल्स हो जा रहा है। 999 हाँ यूनिट्स जो अभी ऑफर कर रहे हैं मतलब सेल के लिए, वो भी पूरा हाँ मतलब हाँ, वो आउट ऑफ बाय स्टॉक बैक, चल रहा है, हाँ बाय बैक कर रहे हैं। बायबैक हाँ ऑप्शन के साथ। करेक्ट, ठीक है, फाइन, ओके, सर एक और चीज ऐड थैंक करूँ। यू सर। ये जो हाँ। स्कॉडा है ना, ये लोग का जो हम्म स्कॉडा काइलैक मॉडल है, फोक्सवैगन वर्टुस जो अलग सेगमेंट में है, स्कॉडा हम्म, स्लेविया और स्कॉडा फोक्सवैगन टाइगून, इनका इंजन सब सेम है। मेन सेम है, कॉस्ट तो यस। इंजन ही है ना, मतलब कोई भी बिके इनको अच्छा ही है। यस यस, हाँ, दोनों सेम ही है। पर हाँ वोक्सवैगन की ज्यादा बिकती नहीं है, बट उसका क्या है, उसका सर्विस स्टेशन का प्रॉब्लम है वोक्सवैगन का। हाँ उसका, हाँ वर्टुस का इंजन का भी वो लोग को वो इंजन हैंडल नहीं करता है। मैंने रिसेंटली कंप्लेंट देखा कि वो स्पीड ब्रेकर पे इंजन ही गिर गया नीचे। हाँ, हाँ ये अच्छा, हुआ था रिसेंटली। ओ, वर्चेस का क्या उसका हाँ क्या हुआ? वर्चुस का इंजन स्पीड ब्रेकर की वजह से गिर गया, ऐसा भी नहीं कि कोई एक्सीडेंट किया था, स्पीड ब्रेकर पे धक्का लगा और फिर वो ये गिर गया, इंजन ही गिर गया नीचे, प्रॉपर इंजन गिरा मतलब। ओके, हाँ, वोक्सवैगन का एक प्रॉब्लम है इंडिया में थोड़ा, दे आर नॉट एबल टू स्केल अप, क्योंकि वो लोग ने पोलो GTI भी निकाली है, पता नहीं 60 लाख की गाड़ी निकालते हैं। उनका मेंटेनेंस सर हैचबैक, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, मतलब टू व्हीलर आ जाएगी उतने में, ऐसा है। करेक्ट करेक्ट, दैट इज व्हाई, हाँ, इंडियन प्रीफर नहीं करते वो गाड़ी वोक्सवैगन। इवन आई, व्हेन आई वाज गोइंग, वन ऑफ माय मैकेनिक फ्रेंड टोल्ड मी दैट ऋषभ, कुछ भी गाड़ी ले वोक्सवैगन मत लेना कभी, हाँ उन्होंने ऐसा है। वोक्सवैगन बेचा वर्टुस और फिर वेरना खरीदा जो नया वाला है ना, हाँ हाँ हाँ, ओके, Hyundai वाला। आई थिंक स्कोडा कुशाक और वोल्क्सवैगन टाइगुन सेम ही कार है ना सर? हाँ हाँ, कुशाक इज सेम एज टाइगुन एंड स्लाविया इज सेम एज वर्चेस। जस्ट लाइक सर ब्रेजा एंड अर्बन क्रूजर। नहीं नहीं, बट ये दोनों ऑपरेट अलग अलग करते हैं, वोक्सवैगन ऑपरेट्स डिफरेंटली एंड स्कोडा ऑपरेट्स डिफरेंटली, दोनों के यूनिट्स अलग है, दोनों के टारगेट्स भी अलग है। तो नहीं, हमको हमको उन्हों से मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है कि अगर ये दोनों बिक रहे हैं तो प्रॉब्लम हमारे इन्वेस्टमेंट्स को आएंगे, मारुति और हुंडई को, मारुति हुंडई महिंद्रा। तो अभी सिंस वो तो कि वोक्सवैगन ग्रुप है, तो वो लैम्बोर्गिनी भी बेचता है, तो वो भी सब इंडिया का ही पार्ट है। सो वी डोंट हैव टू टॉक ऑन दोस पार्ट्स कि वो लोग दोनों सेम बेच रहे हैं कि नहीं, दोनों ग्रो हो रहे हैं, तो उसका प्रॉब्लम हमारे लोकल कंपनीज को होगा, वेयर वी आर इन्वेस्टेड। राइट सर, दिस इज व्हाट वी थैंक यू नीड टू सर। टॉक अबाउट। ओके सर। या कृष्णा, एनीथिंग ऑन नेस्ले? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Wait. Small news on Nestle. So Nestle is investing 2.2 billion plus and 8 months कृष्णा, योर production. वॉइस इज टू लो, कृष्णा, योर वॉइस इज टू लो। I connect. Audible. तो कम आ रहा है, से अगेन, Hello. कम आ रहा है।
Hello. Hello. No, no, it's fine. Yeah. Okay, okay. So it's a small update about Nestle. So Nestle is investing 2.2 billions to expand its munch production. Talking about Nestle revenue, Nestle drives around 38.1% from milks and nutrition products, uh, followed by prepared dishes and cooking aids 30.9%, confectioneries 16.6%, and liquid beverages 14.4%. Currently, company has 10 manufacturing plants across 9 states and currently expanding Sanad Gujarat facility by 8.3k tons per year with an investment of 2.2 billions to scale up munch production. Confectionery market will grow at a CAGR of 7.3% year on year. The expansion, coming to the conclusion, the expansion reflects Nestle focus on scaling its confectionery segment, which is growing impressively. Uh, Demand driven by the rising disposal income, rising in gifting trends and urbanization. Thank you. Confectionery मतलब चॉकलेट्स है ना? Yes, sir. Okay. So, guys, what I feel is usually whenever this war type of situation happens, या ऐसा कुछ, even like COVID जब हुआ, तो one thing remains common is FMCG. तुम चॉकलेट्स खाना नहीं छोड़ते, तुम खाना खाना नहीं छोड़ते, चाय पीना नहीं छोड़ते, whatever the pricing is. So ये ऐसे सब सिनेरियो में it is said to be a defensive sector. यार अगर तुमको आज इन्वेस्ट करना है तो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है? अच्छा, एफएमसीजी जो फूड से रिलेटेड है, एफएमसीजी में एचयूएल भी आया, दैट इज नॉट रिलेटेड टू फूड, इज बिकॉज एचयूएल में वो काफी क्रूड कंपोनेंट काफी बड़ा हो जाता है. सो एनीथिंग रिलेटेड टू फूड that will grow, मतलब that will not have no maximum impact on any of these companies. तो ये एक ध्यान में रखना है कि ये फूड के बारे में, हर्ष तुम बोल रहे थे फूड के बारे में, तो ये ध्यान रखना कि कौन से कंपनीज है जो सिर्फ फूड बनाते हैं, मेजरली रेवेन्यू सिर्फ फूड से आता है. तो दोज कंपनीज लाइक्स अ गुड बेट. मतलब ये टाइम पे अगर तुमको कल कोई पूछे इन्वेस्टमेंट थीसिस, वॉर चल रहा है, ऐसा चल रहा है, विच सेक्टर टू इन्वेस्ट, तो ये अभी नाम तो ऑटो में इन्वेस्ट कर सकते हो ना. कोई ग्रोइंग सेक्टर तो कोई ग्रो ही नहीं हो रहा है. क्या ग्रो होगा? तो ये एफएमसीजी, वही रेडी टू कुक इज सर, वन बट ऑफ द. मतलब कि कुछ मतलब कि न्यूज़ वो भी थी ना कि इनकी ये पैकेजिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है क्रूड की वजह से. हाँ क्रूड के हाँ. तो डेरिवेटिव यूज करते हैं ये. या सो नाउ यू सी, हाँ. तो लोग ने भी प्राइस हाइक की बात की है कि दे विल इंक्रीज द प्राइस. हम्म. तो क्या, इट इज यस इजी सर. टू ट्रांसफर द प्राइस टू कस्टमर्स, क्योंकि तुमको 2 रुपया बढ़ा दिया तुम्हारे पार्ले जी के बिस्किट में, कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं सर. नहीं. हाँ, तो ऐसा है, इंडियंस ऐसे ही है कि उनको क्या फर्क पड़ना है, 1 रुपया बढ़ा. बट 1 रुपया अगर तुम पार्ले जी के हिसाब से देखो, मतलब 10 रुपए का आता है, 1 रुपया बढ़, 2 रुपया बढ़ा, तो 20% इंक्रीज है वो उनके लिए. तो यस सर. ऐसा है. तो वो एक एफएमसीजी में एक फायदा होता है. हाँ, बट अभी वो कितना क्विकली प्राइस चेंज करते हैं वो, और कैसा है, वो एफएमसीजी पूरे सब में होना चाहिए, सिर्फ एक ने किया तो प्रॉब्लम होता है. ऑब्वियसली सिर्फ पार्ले ने किया तो शायद तुम उस पार्ले का बिस्किट खाओगे नहीं, इफ यू आर नो दैट प्राइस प्राइस ब्रैकेट, जिनको 2 रुपए का फर्क पड़ता है. मतलब तुमको अगर कोई सनफिश लेट्स से 10 रुपए में आ रही है और पार्ले जी भी 12 रुपए में आ रही है, तो प्रोबेबली यू विल बाय सनफिश, नॉट पार्ला जी, सॉरी, नॉट पार्ले जी. यस सर. तो यूजुअली एफएमसीजी इज सेट टू बी अ डिफेंसिव सेक्टर इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो. तो इंटरव्यूज अगर आते हैं तो एफएमसीजी पे भी ध्यान रखना, जैसे हम मॉडल्स कर रहे हैं, तो ऑल्सो कीप एन आई ऑन दिस एफएमसीजी में भी, स्पेसिफिकली द वन हु आर इनटू फूड. एचयूएल नहीं है उसमें, एचयूएल नहीं है, नेस्ले है, ऑब्वियसली ब्रिटानिया है. देखो उनके ना स्टॉक्स गिरे ही नहीं है, एचयूएल नेस्ले ब्रिटानिया के हार्डली गिरे. टाटा कंज्यूमर्स इज देयर, वो तो सब में ही है. दूसरा तुमने और कौन सा सर इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी अपन ट्रैक कर सकते हैं ना सर? ट्रैक कर सकते जैसे हैं? हाँ. और में दूध और रिलेटेड आइटम्स है वो भी कंटिन्यू रहेंगे? क्या है इस पर कोई कंपनी इसमें ना, हाँ, दूध में क्या प्रॉब्लम ना, उस दिन पता है हम पढ़ रहे थे, किसी ने ही बोला दूध में क्या प्रॉब्लम है कि तुम ना एडल्ट्रेशन अलग, कुछ. अडल्ट्रेशन का, हाँ. एंड प्रॉब्लम और भी है कि कुछ तुम डिफाइन नहीं कर सकते कि तुम्हारा दूध अच्छा है, मेरा दूध अच्छा है. करते हो क्या तुम ऐसा दर्पण? मजा Yes, कर sir, रहे हो? and हम्म, the market is also हाँ largely सर fragmented. I mean, South हाँ has different players, North has different players. हाँ, करेक्ट. तो ये, हम्म, हाँ, बराबर, कोई लार्ज प्लेयर है नहीं उसमें. वो पराग मिल्स और वो सब है, 2-3 कंपनीज है. And दो sir, लाख up until like a decade ago, majorly हम लोग सब like दूध वालों से ही लेते थे. After technology and all has introduced, we are हम्म, starting, moving towards organized players. करेक्ट.
उस दिन कुछ आया, आई थिंक मैंने ना स्विगी पे कुछ आया, मैं वाइफ वाज सेइंग अरे ये एग वो लोग ने कुछ अलग करके दिया है। मतलब एग में क्या अलग करके देंगे, सभी सेम ही होता है। मतलब अननेसेसरी तुम बोलोगे नहीं ऐसा है वैसा। फिर वो ब्रेड में आया था कि ब्रेड में व्हीट ब्रेड में देंगे, अभी तो सभी दे रहे हैं व्हीट ब्रेड। सो हम्म, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? ये प्रॉब्लम होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, कि तुम्हारे पास वो प्राइसिंग पावर नहीं है। अभी ना इफ यू टॉक अबाउट नेस्ले, नेस्ले पे प्राइसिंग पावर नहीं होगा, बट द स्केल इज सो ह्यूज। सब खाते हैं ना नेस्ले, मैगी, मंच, किटकैट, सब खाते हैं। यस सर। तो उनको इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि ये सब सेक्टर्स में तुम्हारे अगर पैसा कम हो रहा है तो एफएमसीजी इज सेट टू बी योर एफडीज इन दिस काइंड ऑफ। और वो भी फूड वाले, सिर्फ फूड वाले। वरना इमामी गिरा है, च्युअल्स गिरा है, कुदरत कंज्यूमर्स गिरे हैं। नेस्ले ब्रिटानिया, बेस्ट बेस्ट बेट टू बाय। दैट इज व्हाट कॉमन सेंस टॉक्स अबाउट। ये सब प्रोडक्ट तुम कितने भी पैसा क्यों ना बढ़े, तुम तो पियोगे। चाय पीना बंद करोगे, पेरेंट्स को बोलोगे नहीं मत पियो चाय, सर जैसे ही आई पैसे हैड बढ़ अ गई चाय। डाउट या regarding the FMCG sector only. So, nowadays many newest companies are coming, whether it is tea or say face washes or noodles even, and these are generally companies that are privately held from startups. So it hurts the margins and top line revenues also of established companies like HUL, Nestle, Britannia. So, sir, I mean, are they any more stable as we used to see them? सर जैसे मिनिमलिस्ट को खरीद लिया 1500 करोड़ में, तो उसकी जगह डॉट एंड की आ गया, जॉय आ गया. So what I'm trying to say is हाँ one company gets acquired, two new more crop up. So the competition never seems to be ending. Like we have three players in the telecom. There is virtually no entry barrier in the FMCG segment, and that's what make me worry regarding investing anything in FMCG. Because sir, if you have noticed the Good Day biscuits, let's take Britannia for example, the Good Day biscuits that were around 2 decades ago or even 1 decade ago, the quality has largely reduced. Not just the size but also the quality. correct, correct. Yeah. See, so competition is there. I will not deny on the competition part. Uh, so what is happening? I was reading this a few months back. They are saying that overall, this D2C companies or maybe the startup companies are not able to scale up their products. So the large companies are, yes, they definitely they are getting the pinch of it, but now they are getting acquired. So if you see, there's a lot of acquisitions that happened in the last so many years for this to acquire this D2C brands by large companies. तो क्या अभी नेस्ले के पास जैसे स्केल है, लॉजिस्टिक है, वैसे मे बी योर स्टार्टअप कंपनीज वोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्केल. Yes, sir. So now the companies are growing based on acquisitions. That's it. Okay. Okay, sir. So है competition तो है, I don't deny on that, but limited scale पे है उनके. Okay guys, I think we'll stop here. Leave Uh, something. Anyone? so I had sent you my EIH file. I had some doubts. If you can bite the time right now or maybe tomorrow. What was the doubt exactly? सर फोरकास्ट में इशू हो रहा है. इफ यू ओपन माय हाँ फाइल ठीक है, एंड गो. ठीक है, फिर कल क्लास में ही करते हैं ना, 10 के 9 Okay, बजे sir. पॉडकास्ट Yeah, में sir, कर no दो. हाँ issue. so that And yeah. sir, just one quick thing to say. I have started doing Uniper Hotels as a But competitor. It operates Hyatt. Although the pricing is not similar to Oberoi, but I felt that it is moving towards premium segment also. Is that okay, or I should move on to another company? so I said now Sammy. So any small company is fine. Uniper, what is it into? Which are the Sir, top? Hyatt Hotel. It हाँ manages Sammy is Hyatt also Hotels. correct. Fine. It's okay. You Okay, can do. sir. See, it's up to you. I just said my companies that I am looking at this. You can also say, sir, this is a company also looks good. Totally fine. To you. Okay. Thank you. Okay. Okay. हेलो Yeah. Alright. सर, आपने देखा सर, मॉडल चेक किया? मॉडल हमने किया था सर, मतलब आई डोंट नहीं सर, थिंक. एक्चुअली सर मेरा फॉर्मेट थोड़ा अलग था सर, इसलिए आपको मैंने बोला था कि आप पर सिर्फ चेक कर लेना. अच्छा नहीं किया, मेरे को भेजना वापस. सॉरी मैं भूल गया, मेरे को ओके सर, वापस एक बार भेजना. ओके फाइन.
तो एक बार नहीं, मैंने किया नहीं रहेगा तो एक बार मेरे को वापस कर देना कि सर वापस देखना, बिकॉज समटाइम्स आई सी योर मैसेज एंड देन इट गोज अप, ऐसा होता है। ओके ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, मैंने खोला तो था तुम्हारा मॉडल, रिमेम्बर डाउनलोड तो किया था। ये बेखतर आते थे, इट इज लुक्स गुड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या अलग था इसमें? सर पर्टिकुलरली पीएनएल बैलेंस शीट और कैश फ्लो सर थोड़ा फॉर्मेट अलग है सर, बस वही, और कुछ वही डाउट था सर कि वो नहीं चलेगा ना। फॉर्मेट नहीं, वो तो ठीक है, फॉर्मेट इज फाइन, मतलब वो तो अच्छा दिखने के लिए फॉर्मेट है, वो तुम, वो मैंने मेरे हिसाब से किया है, तुम तुम्हारे हिसाब से करो। द ओ, पॉइंट, इट लुक्स गुड, इट्स फाइन। ठीक है। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, टोटल परसेंटेज, ये क्या लिया है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ और परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, ग्रोथ परसेंटेज। सर आप कौन सा वाला देख रहे हो, मतलब एग्जैक्ट? ये EBITDA, जैसे EBITDA क्या है वो, दो दो क्यों लिया है हर इसमें? सर जस्ट अ मिनट सर। सर आप पीएनएल में हो ना, मतलब सर कौन सी शीट में एग्जैक्टली? हाँ PNL, yes। हाँ। सर एक ही एबिट है ना सर, राइट? हाँ तो EBITDA तुमने लिया है परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, और वो एक सर ब्लू एक में डाला ग्रोथ है, है एक और रेड एक में सर, डाला है, हाँ। हाँ एक ग्रोथ है सर और एक ग्रोथ एज अ क्या है वो, परसेंटेज ऑफ। ग्रोथ? सर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। हाँ तो वहाँ पे ग्रोथ ईयर ऑन ईयर लिखना, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। वाई ऑन, ठीक है। ओके ओके क्यों कंफ्यूज हो रहा है ग्रोथ परसेंटेज में? ओके ओके सर। ओके, ओके, इज फाइन, लुक्स गुड। ठीक है ये सर। तुमको प्रेजेंट करना है फिर, क्या है सैलेड, क्या क्या फर्क है उसमें, क्या फर्क है? हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, सिर्फ हाँ। सर एक बार सिर्फ मॉडल चेक हो जाए तो फिर मैं बोला एक बार कंफर्म हो जाए तो अच्छा है। तुम्हारा DCF कर दिया क्या तुमने? नहीं नहीं सर, बाकी है बाकी है। ओके ना, डीसीएफ ओके हुआ। ओके, फाइन, फाइन। अच्छा गाइस, वन मोर अपडेट, मैं ना आई एम डूइंग अ फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लासेस जो चालू हो रहे हैं फ्रॉम मंडे, ठीक है, मंडे को 7:30 to 9, ठीक है। तो विद्या मैम की सेशंस भी वही टाइम पे है, 7 to 8, उसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। सो दोज हु आर गुड एट प्रेजेंटिंग, probably they can come for this week only, ये 2 वीक के लिए। दे कैन कम फॉर द क्लास आफ्टर विद्या मैम सेशन, ठीक है, 7 से, जो विद्या मैम को बोल दो कि मैम हमको 7:30 को निकलना है, तो यू कैन ज्वाइन द 7:30। ये क्या है ना, व्हाट आई फील इज, तुमको ना एक बेसिक मॉडल बनाना आना चाहिए। उसके रिकॉर्डिंग्स तो है ऑलरेडी, इस पे तुम्हारे क्या आर के एडवाइजरी के फोल्डर पे है, बट जिनको करना है, दोज हु आर विलिंग टू डू इट क्विकली, कभी कभी क्या होता है, आई फाइंड दैट तुम लोग को आता है चीजें, बट जस्ट बिकॉज कभी किए नहीं होगे तो तुमको वो समझ में नहीं आ रहा, या तुमने कभी फुल फ्लेज किया नहीं होगा। तो आई रेकमेंड कि वो लाइव है सेशंस, उसके रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगे, बट अभी फ्रॉम द नेक्स्ट बैच आई एम वही स्टार्टिंग कि तुमको आते हो तो मॉडलिंग आना चाहिए, बिकॉज मुझे तुमको एक्सपीरियंस देना है, मॉडलिंग नहीं सिखाना है, बिकॉज वो काफी बेसिक है। मॉडलिंग को और हमारे जो सेशंस में होंगे हम उसको और रिफाइन कैसे करेंगे, वो मैं तुमको वीकेंड सेशंस में बताऊंगा। बट ये जो होंगे वीकडे पे, इट इज लाइक किसी ने पूछा मॉडलिंग आता है तो हाँ आता है, ऐसा होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि कल, इवन लेट्स से कल ओपनिंग आए तो पूछे पूछे, कभी कभी ना ऐसे आते हैं मेरे पास रिक्रूटर्स, कल ही एक आया, बोलते हैं कि ऋषभ टेल मी जिसको मॉडलिंग आता हो, बेसिक वाला। ऐसे होते हैं किसी, कभी समटाइम्स यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, यू आर गुड एट समथिंग, बट तुमने कभी चांस ही नहीं मिला तुमको बात करने के लिए, इसलिए तुमने कभी बात ही नहीं किया। सो आई वांट टू फाइंड सच कैंडिडेट्स जिनको मॉडलिंग भी आता है, एंड फिर दे आर गुड एट कम्युनिकेशन एज वेल, एंड दे आर डूइंग थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि कल भी क्रिजिल की HR थी, शी कॉल मी एंड सेड ऋषभ आई वांट फ्यू सीवीज जिनको मॉडलिंग आता है, तो मैंने उसको भेजे फ्यू सीवीज। फिर बोलती है ऋषभ इसमें से मुझे जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है उसी का भेज, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज इट इज अ क्लाइंट फेसिंग रोल, कम्युनिकेशन शुड बी स्पॉट ऑन। तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है, एक तो विद्या मैम मुझे देती है, और जो सुबह तुम बात करते हो उससे मैं समझता है। हाँ, बट अभी मॉडलिंग भी आना चाहिए, एक बेसिक मॉडलिंग आता है तो चल जाता है। कल मैं कर रहा हूँ, सॉरी फ्रॉम मंडे, probably come to the sessions, same way I will send the Zoom link in the group, जिनको जिनको आना है मेरे को बता दो सिर्फ, तो मैं Zoom link भेजता हूँ। सर अब उस मॉडलिंग में कुछ अभी ये दिक्कत आती है कि आप जैसे क्लास में सब सिखाते हो सर, सो तो वो तो सर समझ में आ जाता है, बट हाँ वी आर नॉट एबल टू, आई मीन, रिमेम्बर लाइक इफ यू आर मेकिंग इट फ्रॉम स्क्रैच लाइक फ्रॉम ब्लैंक शीट, देन what are the formulas which are should be the which cells could be linked with what, like that, that is the problem I am facing. हाँ, तो जो टू, तो वही तुम करो ना, पहले जो वीडियो से ना तुमने तो अटेंड किया था ना दर्पण पहले, तो
तो हाँ पहले सर। वो पहले बनाओ ना, एक तो जैसे टीवीएस का मैंने मैंने वैसे वैसे कॉपी करके बनाओ ना, सेम टू सेम जो मैंने हाँ बनाया। सर। एक एक स्टेप मैंने दिया था क्या करना है, तो फिर वैसे वो चालू होता बस है। कॉपी करके सर आई कैन एबल टू मेक, बट लाइक वो क्यों किया सर ऐसे, वो नहीं समझ में आता है तभी। हाँ, क्यों किया तो क्या क्यों किया, लिंकेजेस। हाँ नहीं, जो फॉर्मूला रहती है जैसे वर्किंग कैपिटल है तो उसमें स्केड्यूल्स में कौन से पर्टिकुलर्स लेने हैं, वो भी तो सर नहीं ऐसे नहीं, माइंड में। वो तो मैं इधर सिखाऊंगा, वो तो आई विल शो यू टेल इट इन दिस। वो जो सब तुमने जो सेशन अटेंड किया था वो बेसिक था, जिनको मॉडलिंग सिर्फ सीखना है का ना, सीवी पे हम्म। डालना है कि ना मुझे हम्म। मॉडलिंग आता है, हम्म। ऐसा है। तो वो ठीक है, तुम तो अभी हम वापस करेंगे वैसे तो स्लो स्लो, तो बट सर तुमको वो मेरा उसमें ऐसा है, मैं क्लास में आ सकता हूँ ना? अभी तो क्लास में मैं इधर से चालू करा ना सब, तो मैंने ब्लैंक से चालू किया मैंने। हाँ सर। अभी जो किया था पूरा ब्लैंक से चालू किया ना मैंने। हाँ सर। कहाँ से ना, वो भी बताया मैंने कहाँ से नंबर लिए क्या किया, तो सब हाँ सर बताया ना। आपने किया था, लेकिन सर मेरे को ये वो पर्टिकुलर्स याद ही नहीं रहते सर। नहीं तो वो तुम बार बार करोगे तो होगा ना, वो एक टाइम पे थोड़ी होगा एक दिन देख के। जब तुम रोज रोज 3 4 मॉडल बनाओगे तब तुमको कुछ समझ में आएगा कि यार ये मॉडलिंग कैसे बनता है। और तुमको हर एक ओ, कंपनी में प्रॉब्लम मिलेगा, हर एक कंपनी में तुमको अलग अलग चीजें मिलेंगी। हाँ ऐसा है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ओके सर। सर सर जो मंडे से चालू होने वाला है उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? हाँ मैं वो लिंक भेजता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you everyone, have a nice day, bye Thank you, bye। sir.